नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कॉलेज फ्रैक्चर के रिडक्शन और उसके प्लास्टर टेक्निक के बारे में सीखेंगे। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि इसमें से टिपिकल 6 डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं, जैसे लैटरल डिस्प्लेसमेंट और टिल्ट, इम्पैक्शन, डोर्सल डिस्प्लेसमेंट एंड टिल्ट एंड सुपेनिशन ऑफ डिस्टल फ्रैगमेंट। अब हम देखें किस तरह से रिड्यूस किया जाता है और किस तरह से प्लास्टर का अप्लाई किया जाता है। वैसे तो ये सर्जन का काम है मेनली, लेकिन मुझे मौका मिलता है कि हम डेली ओपीडी में कोलिस फ्रैक्चर पेशेंट देखें और सर्जन के साथ मिल करके रिड्यूस करना और फिर उसके बाद प्लास्टर का एप्लीकेशन करना। सो फर्स्ट स्टेप इज डिसइम्पैक्शन ऑफ द फ्रैगमेंट्स। डिसइम्पैक्शन के लिए हम एक असिस्टेंट चाहिए और एक सर्जन। असिस्टेंट काउंटर ट्रैक्शन देता है और सर्जन मेन ट्रैक्शन देता है और डिसइम्पैक्ट करता है। फॉर डिसइम्पैक्शन 2 persons आर नीडेड। चीफ पर्सन्स हु अप्लाई द ट्रैक्शन एंड अप्लाई प्लास्टर एंड असिस्टेंट अप्लाइज काउंटर ट्रैक्शन। खींचते समय ऐसा मानो प्रतीत होता है जैसे सर्जन कह रहा हो, ये हाथ मुझे दे दो ठाटकूर, या फिर कहते हो जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। सो इन दिस वीडियो, इस वीडियो में हम देख सकते हैं किस तरह से रेडियल लेंथ प्राप्त हो चुका है रिडक्शन यू कैन गेन, और द चीफ पर्सन गिव्स ट्रैक्शन एंड increases dorsiflexion to increase the deformity initially, so that the two fragments are disengaged or disimpacted. आफ्टर डिसइम्पैक्शन के बाद हमारा काम होता है कि किस तरह से उसे रिड्यूस करें। फ्रैक्चर को रिड्यूस करने के लिए with traction still maintained by means of right hand, the surgeon presses the distal fragment in volar direction. You can see in the pictures. Or so in ulnar deviation and flexion of the wrist, slight ulnar deviation. So by right hand, surgeon presses the distal fragment in volar direction and then follows this with the final flexion of the wrist. The thinner eminence of the left hand applies counter pressure against the proximal fragment during this management. You can see in the CR images, we have reduced the fracture. CR के अंदर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर, CR मशीन के अंदर काम करने से ये फ़ायदा होता है कि हम रियल टाइम में हम देख पाते हैं कि किस तरह से रिड्यूस हो पाया है कि नहीं। अदरवाइज ओपीडी में दोबारा से हम पेशेंट को री एक्सरे के लिए भेजते हैं। रिडक्शन के बाद चेक एक्सरे के लिए हम भेजते हैं ताकि हम चेक कर सकें कि वो रिड्यूस हुआ है कि नहीं। सो जनरली एक थर्ड पर्सन कम इन पिक्चर, जो कि 2 और 3 फिंगर्स को होल्ड करके ट्रैक्शन देगा। थंब को एबडक्टेड रखेंगे और स्लाइट अल्नर डेविएशन और फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट should be maintained and counter traction should be given by the assistant one. इस डायग्राम में देखें, so slight flexion, not should be too much flexion should be given. In this diagrams you can see this position of the reduced fracture by locking the fracture by pronation. So the fracture is now rendered stable by the surgeons pronating his right hand. So now cotton bandage is applying the surgeon. Generally 2 layer of the cotton bandage is applied. This should be done in properly so that the plaster will be smoothed out. Now 4-inch bandage of POP is applied over the wrist and forearm. You can see in this picture, this surgeon is applying the plaster, and after
reduction and locking of the fracture by pronation of the forearm. So the fracture is now rendered stable by the surgeon pronating his right hand, this carrying the distal fragment into the pronation, at the same time deviating the patient wrist towards the ulna, that is the ulnar deviations. If the pronation is maintained, the reduction will hold without traction. So application of the plaster to a Colles fracture is a tricky business, and stability of the reduction depends on the maintaining the strong pronation. In this position, the ulnar deviation and slight palmar flexion is possible. When the plaster has been completed, the surgeon resumes his hold and molds the plaster at the point of local pressure on the two fragments until the plaster has hardened. So the thinner eminence of the left hand applies counter pressure against the proximal fragment during this movement, and by the right hand we apply pressure on the distal fragment. This video you can look. So with that, in this CR images you can check the reduction of the fracture. It is has been reduced properly. So time to time you can check the CR images. So all the displacements of the Colles fractures should be reduced and proper alignment should be maintained. And after that, two POP bandages. Then again we apply a 4-inch POP bandage and complete the plaster. So with the traction still maintained, by means of right hand the surgeon places the distal fragment in a volar diatic circle and then follows this with the final flexion of the wrist. The thinner eminence of the left hand applies counter pressure against the proximal fragment during these movements. For a smoothing of the plaster, we invert the gloves and wetting the glove पानी में भिगो करके उसको से स्मूथ करते हैं, चिकना करते हैं, so that plaster looks very smooth and well molded plaster. It should be well molded plaster. Thumb and MCP movement should be free, and it should not compromise the palmar arches of the hand. So during traction also we hold only the 3 fingers, left the 5th finger one, and this in video you can look movements of the thumb and MCP is properly done. So this is the complete process of the plaster. So life is a learning process, so keep learning